स्वच्छ भारत का इरादा इरादा कर लिया हमने देश से अपने ये वादा कर लिया हमने। एक पवित्र सी हवा बहेगी, उज्ज्वल उज्ज्वल हो भारत, कोना कोना निर्मल होगा, विश्व कहेगा जय भारत। जाग उठेंगे भाग्य हमारे, स्वच्छ बनेगा ये भारत। स्वच्छ भारत का इरादा इरादा कर लिया हमने देश से अपने वादा कर लिया हमने, ये वादा कर लिया हमने, ये वादा कर लिया हमने, ये वादा कर लिया हमने। In 1994, Surat in Gujarat was the center of a plague outbreak. Suddenly, the shining image of Surat as the world's diamond cutting capital was dulled. Poor waste management caused an estimated loss of $1 billion in terms of Indian exports and lost 40 to 60% of its anticipated tourism, a significant amount in those days. After this catastrophe, Surat completely revamped its waste handling strategy. And the good news is, it has continued to improve ever since. In fact, Surat was the first to initiate many environmentally sustainable waste practices at a large scale. Today, Surat has regained its global reputation. Now, 40% of India's total man-made fabric and 28% of India's total man-made fiber production comes from this city. 90% of world's diamonds are cut and polished in Surat. Simple demography shows it has witnessed unprecedented growth over the past 6 decades. In 1951, it covered an area of 8.1 square kilometers, with a population of 2,20,000 people. Today, this area has expanded to 326.52 square kilometers, and the city has a population of 45 lakh. Before the plague, the city would dump its garbage in open areas, where it would attract pests. तो उस टाइम में सॉलिड वेस्ट कलेक्शन की सिस्टम डिसेंट्रलाइज की तरह थी। मतलब कैसा था कि हमारे पास कंटेनर स्पॉट्स या कुछ था नहीं, लोग अपना अपना कूड़ा कचरा जो भी था तो कहीं पे भी उनको निशन स्पॉट्स दिखाई देते थे। तो उस तरीके से वो गार्बेज कोई कॉमर्शियल यूनिट था या डोमेस्टिक जो भी घर वाले थे तो अपने हिसाब से अपना खुद का कूड़ा कचरा इकट्ठा करके जहाँ भी उनको स्पॉट दिखाई देता था तो वहाँ पे वो डाल देते। तो कलेक्शन सिस्टम इस तरीके की थी कि ड्यूरिंग नाइट आवर्स आवर जेसीबी एंड दी ट्रक्स वेर मूविंग अराउंड द सिटी, और उस जो भी स्पॉट्स थे उस स्पॉट से जेसीबी उसको लिफ्ट करने के बाद ट्रक में लोड करता था और हमारी डिस्पोजल फैसिलिटी पे उसको भेजा जाता था। तो ये एक बहुत ही मतलब पुराने वाली और कन्वेंशनल सिस्टम थी। But after the plague, the city started looking at alternative options. Currently, Surat generates about 1,600 tons of municipal waste daily. We try to, focus mainly on the zero waste, concept, so that whatever generation that is being utilized, whether in terms of fertilizer conversion, in terms of power generation, in terms of debris conversion into useful materials like curbs and other kind of materials, and also biogas generation and recycling of wastewater that could be used for the watering the gardens and then dividers
and basically it's a kind of pressure on the municipal corporation to think, because creating facilities is not very easier one. And also, the amount of population and the growth the city is experiencing. So we need to continuously innovate on these, aspect, so that the problem, could be minimized and we could give a solution to the city as a whole. The municipal corporation began by providing basic infrastructure and installed 18,000 bins on concrete platform all over the city. These have now been reduced to 10,000 since the Surat Municipal Corporation started door-to-door garbage collection in 2004. एक्चुअली पूरा जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का सिस्टम है उसमें बदलाव हमारे यहाँ लगभग 95-96 से आया है, और उसके पहले 95 से पहले जो हमारे यहाँ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम था उसमें पूरा सेंट्रलाइज सिस्टम था। 95 के बाद हमने वो पूरा सिस्टम इवॉल्व किया, और जो कंटेनर्स है जितनी ज़रूरत है वो सफाई कामदार के हिसाब से कंटेनर अलग अलग जगह पर रखवाए। कंटेनर को साफ़ रखने के लिए उधर पेवमेंट भी बनवा दिया, प्लेटफॉर्म बनवा दिए पक्के। तो पक्के प्लेटफॉर्म होने की वजह से वो उसको साफ़ करना आसान हो जाता है। और मॉर्निंग में मैंने बोला पहले, उसी तरह वो सुबह में वो सब कंटेनर आजू बाजू में साफ़ करते हैं, उसका जो कचरा है वो निकाल के कंटेनर में डाल देते हैं, और उसमें पाउडर छिड़काव भी आजू बाजू करते हैं। फिर ये जो वार्ड ऑफिस है उसका भी हमने ज़्यादा वो इंक्रीज़ किया, और अभी तक 87 तक पहुंच गए। शुरुआत में 10-12 वार्ड ऑफिस थी। The door-to-door garbage collection was started in 2004. A fleet of closed-body vehicles was introduced by the Surat Municipal Corporation with vehicle tracking and global positioning system or GPS technology. The new vehicles began to collect waste directly from 12 lakh households in the city. The process involved collection, segregation, storage, transport, processing, and disposal of waste generated from all sources in the city. Waste collection from the city is assigned to various private contractors. The contractors determine their own routes for waste collection. Garbage collection usually begins at 7 a.m. and is completed by 2 p.m. A second shift operates between 5 p.m. and 11 p.m. on commercial routes. 2004 में ये डोर टू डोर गार्बेज कलेक्शन सिस्टम शुरू किया। उसके पहले 1-2 साल तक हमने वो एक आध जोन के अंदर, एक वार्ड के अंदर पायलट प्रोजेक्ट करके हमारे अपनी गाड़ियों से शुरू किया था। फिर उसके एक्सपीरियंस के आधार पर हमने वो टेंडर निकाले थे, और टेंडर के अंदर जो एजेंसियां आई हैं उनको हमने वो कॉन्ट्रैक्ट दिया है। Together, these agencies have deployed 210 vehicles and around 1,000 helpers. The private agencies have to allot at least one supervisor for each ward and 2 to 3 helpers per vehicle. The supervisors of the door-to-door garbage collection program report every day at the ward office and ensure that the services are provided efficiently. To reduce waste spillage and handling between the source and final destination, the municipal body set up 6 transfer stations at Katargam, Varacha, Pal, Anjana, Bhatar and Bhestan. Contractors transport 50% to this to transfer stations to be trucked to the landfills. सॉलिड वेस्ट रूल 2016 और उसके पहले भी सॉलिड वेस्ट रूल 2000, उसमें मिनिमम हैंडलिंग ऑफ वेस्ट वो बेसिक था पहले। उस हिसाब से हम लोग, जैसे एक रेसिडेंस हाउस है उसको यूनिट बोलते हैं, यूनिट में से कोई भी हाउस होल्ड जो अपने घर में डस्टबिन में कलेक्ट किया हुआ वेस्ट है वो डोर टू डोर के व्हीकल में दे देता है, और वहाँ से विदाउट हैंडलिंग
वो वेस्ट डोर टू डोर व्हीकल से यहाँ पे ट्रांसफ़र स्टेशन पे आ जाता है और यहाँ पे भी विदाउट हैंडलिंग विदाउट मैनुअल वो मैकेनिकली यहाँ से पूरा वो वेस्ट जो कॉम्पैक्टर है उसके अंदर चला जाता है और वेस्ट को हम लोग कॉम्पैक्ट कर देते हैं, जिससे उसका जो भी ह्यूमिडिटी है या तो जो भी वेट मटेरियल है वो निकल जाता है और वो ऑर्डर फ्री ऑलमोस्ट हो जाता है। और यहाँ से वो जो भी हमारा फाइनल डिस्पोजल साइट है वो अप्रॉक्सीमेटली 15 या 20 किलोमीटर है, वहाँ तक जाते हुए वो कॉम्पैक्टर से हम लोग वहाँ ले जाते हैं। All the primary collecting vehicles from door-to-door garbage collection and sweeping reach the transfer station, from where secondary transportation vehicles are loaded for the purpose of transferring it to the disposal site. Primary collection vehicles are sent to the elevated platform for bins through a ramp. Chutes are provided at the platform to receive the mixed solid waste from where it is unloaded by primary collection vehicles. Secondary transport vehicles collect the garbage from under the chute. Waste unloaded from primary collection vehicles is transferred into the closed container provided with a compactor system. The containers are fully closed with leak-proof door opening systems. The transfer stations reduce the need for further handling of garbage. Their closed structure ensures prevention of pests and odor. Surat's waste from door-to-door collection and container lifting is currently deposited at the Khajod landfill. Plans and operations are underway for its conversion to a scientific and sanitary landfill. The landfill spreads over an expanse of 200 acres. A capping project for the landfill has also been initiated. The capped landfill shall then be installed with solar panels for energy generation. A major learning in implementing these new practices was to maximize citizen involvement. The active cooperation of citizens is the cornerstone of this waste management system. To involve citizens in waste management, the SMC came up with Anudan. Under this scheme, the corporation pays housing societies 60 paise per square meter to keep their area and adjoining municipality roads clean. अनुदान स्कीम शुरू करने की वजह बेसिक बुनियादी वजह ये रही कि हर एक जो वार्ड सोसाइटी थी सूरत म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन लिमिट में, वहाँ पे भी उन लोगों की रजुआतें ये थी कि हमारे यहाँ भी सफाई कामदार दूसरे एरिया की तरह हर रोज़ आए और हमारे एरिया में भी सफाई हो। उनकी मांग भी वाजिबी थी, तो उस हिसाब से ये सोचा गया कि अगर उनको ही अनुदान दिया जाए और वो लोग ही अपने सफाई कर्मी रखकर अपनी सोसाइटी को क्लीन रखा जाए, तो उस हिसाब से वो सोसाइटी भी क्लीन रहेगी, वो लोग खुद सुपरवाइज़ करेंगे, तो उनकी जो इच्छाएं थी, उनकी जो डिमांड थी, उसके हिसाब से वो सोसाइटी का भी क्लीनलीनेस रहेगा, उसके ऊपर उनका ही सुपरविज़न रहेगा। The Anudan scheme offers a minimum of ₹1,600 to each society to maintain cleanliness. The rates for payment are 60 paisa per square meter, and for domestic units, 25% of the layout area is considered for this grant. It has now been adopted in more than 600 societies. The Surat Municipal Corporation is constantly innovating in the area of waste management. It is using technology and innovative ideas to aid its work. Technology has helped achieve this turnaround. The local body is employing several technologies and new micro-infrastructure for seamless waste management. These include computer reports for effective monitoring and evaluation, vehicle tracking system through GPS, an active complaint redressal system, automated complaint lodging and monitoring system, cradle-type dustbins for pedestrians.
Surat has come a long way since the plague of 1994. From practically no waste management to a comprehensive waste management system, Surat is a great example of transformation and a model to be emulated by other Indian cities.